Right. Good morning, senior students. By the time you uh, come out of your examination hall, you would find us live with you. And I'm sure all of you must be in high spirits and you would have done reasonably well. And especially students of the Cavalier, we've been time and again telling you while you were here, there were almost 200 plus senior students here. And we've been time and again telling you that remember your UPSC exam is not to just pass the exam, it is there to create your merit, right? So we're not going by the cutoff. The cutoff that we expect in the CBS English paper is 70% and beyond, which is very much achievable. And I'm sure people would have reached somewhere in that level or maybe even beyond. So, Sumit, you've been teaching the students for a very long time, Yes. and you had so much of experience with teaching in English, Absolutely. and you've seen the old CDS papers also. What do you think is the paper gradually getting more difficult, or over a period of time it is getting easier? Sir, what happened post 2012, there has been a tectonic shift in the way that these agencies have conducted the examinations. And it is not just for UPSC, it is for most of the higher examining authorities that have been conducting the examinations. So gradually, every year, the paper is getting a little difficult. Okay. But on that note, we also need to take it to point and consideration that if a student is studying well and if is putting in the hard yards that are required, there is no reason, absolutely no reason why a person cannot achieve the cutoff, the mark that we are expecting him or her to achieve. Right. So we've been telling the students here with the Cavalier, those 200 plus senior students who are here with us, that look, you must have a pattern of attempting your English paper so that you maximize your marks. And generally we tell them that you should attempt antonym synonym first. Right? So can they actually do it very effectively and gain a lot of time by solving them in the beginning? Absolutely, sir. What happens, antonyms, synonyms, idioms, and phrases are information-based questions. They're not questions based on your intelligence. They're questions based on information. Either you know it or you don't know it. Now, what happens by the virtue of a student preparing so hard and having studied well for the past 4 or 6 months, what happens is the words and idioms that come in the examination are those words that have gone through his or her eyes somewhere or the other in the last 6 months. So in these information-based questions, any student has a good chance of solving it very quickly and then saving up his or her time for the sections of passage and. But don't you feel that earlier they used to only give antonym synonym? Now it is a sentence-based antonym synonym. Yes, sir. Yes, right? Sir. Has it made life easier or not? Sir, it has made life easier. Definitely. It has made life Absolutely. easier, right? Absolutely. Even if the person doesn't know the exact answer, if he reads the sentence properly, he or she reads the sentence properly, Absolutely. you can easily reach the correct solution. It is just that expression has to be understood. Absolutely. I'm sure you made them practice a lot. Yes, sir. I made them practice this. And how to go about taking the sentence and then working things out with them. Exactly. Right. So I also feel, and Sumit, and whatever test we've conducted here, we found the students were doing pretty well in that, because if the sentence is understood by you, it becomes much more easier. While he's saying that the paper has become tough, I personally feel that the paper in this aspect of antonym synonym has become easier because now you're given a lead. Yes, absolutely. So, and what do you think about these words? Do they pick out some very strange words which people have probably never heard or not? Or is it common usage? So what I feel is, I tell this to my students, all of my students preparing for CDS and NDA, CAPF and civil services. What happens is, there are few questions that UPSC puts in just to tell that they are UPSC. For people like you and me and teachers and students, for everyone to tell them and let them know that we are the UPSC. So what they do, there is a graph. There is a graph that keeps a track of the words that are in common usage and not being used very commonly. What UPSC does, 1 or 2 words are picked from that kind of a graph, which is not in common use, which was used in the Shakespearean language. So can we say out of the 10 plus 10? Yes, 10 antonym, 10 synonyms? Absolutely. There could be maximum 2 each. Two each. Max. This is the max. 2 each, yeah. Where a person can be in a little fix. Can be baffled. And if a student has a habit of reading, be it newspaper, be it magazines, be it any format of reading, it could be novels, it could be anything. Would he or she stand a better chance to crack this? Sir, any avid reader has a great chance of
understanding and getting through this challenge of any examining authorities of antonyms, synonyms. So after this paper solving, will they be out of gear or they would be synchronized? They will be in full swing. They will be in full swing for the preparations of their SSB. Right. Okay. They'll be full swing in the next paper also. Yeah, but there is a prerequisite to it, sir, that they have studied what we have taught. Okay. There is a very That's important excellent. That's prerequisite excellent. to it. Good job done. Students, we just got the paper on the computer. Okay, so we have question number 87. He feels that he has been. Now, again, we have phrases here. Okay. Taken for ease is a wrong phrase. It is something that does not exist. Absolutely. Taken as granted does not exist. There's nothing called taken as granted. Why not as, why as doesn't written here? Sir, because with this phrase, this entire phrase, we use the preposition for. For. And that's our correct answer. He As feels. is like comparative. Absolutely. As is comparative, there is Absolutely. for is specific. Absolutely. So we've been it is a person here. Yeah. Right. So that is why it becomes definite, and in as there is a comparison. So here Absolutely. comparison doesn't come in. Right. Absolutely. Okay. Absolutely. Right. Let's go to the next one. He has the touch of a maestro. Okay. So, students, what you need to understand is, it's very simple. It's a very simple question if you have the knowledge of these words. This is a question. बहुत simple. Anyway, बहुत simple. So, grating नहीं हो सकता, strong नहीं हो सकता, heavy नहीं हो सकता. It's always silken. With a maestro, look, what happened is, when we see Virat Kohli batting, when we see Narendra Modi delivering a speech, when we see Amitabh Bachchan acting in a movie, we as an audience feel that, wow, how smooth is it? How easily they will. Makhan ke jaise. Makhan ke jaise, exactly. Yes. So a maestro is a legend of his field. He will not have a heavy or a strong touch to his skill. Okay, he will always have a silken touch to his skill. So that Right? Muska type, you know. Absolutely, Makhan ke jaise. He is the one of the blank in the country. okay. Bacho, noun. Rule number 6. What is the catch here? So the catch is something that I'm telling them. Okay. Noun, rule number 6. I had taught them this rule. With the phrases one of, some of, each of, either of, neither of. The moment you see this phrase, we have to remember that a noun in the plural form will be there after this phrase. That's the catch. So by elimination and the basis of this knowledge, we can strike out 2 options. These 2 are definitely not our options because these are singular nouns. Also, this the is specific. No, it is not being specific. It is talking that's where the confusion lies. That's where the students get confused. What happens is you feel that the is being specific, but actually we are not talking about the. We are referring as one of. We are talking about this and not precisely this. Right. So we're taking this as one unit. Absolutely, one of It's the. almost like a phrase. Absolutely, Right. absolutely. Right. So students, now this cannot be our answer because using well renowned is a superfluous error. Renowned का मतलब अपने आप में ही जाना माना होता है. तो well renowned जैसा कोई word exist जैसे नहीं returning कर back सकते. करते हैं. Returning back, है ना? pick up, सीधे. pick up. हाँ, yes. किसी चीज को नीचे तो उठा नहीं सकते. Right, right. Enter into Yes. कभी यूज नहीं करना चाहिए. It's always enter. Same applies. Same applies here. So we have our correct answer as well-known journalist. तो अब हम लोग मैथ्स के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे. एनडीए मैथ्स का पेपर मुझे अभी मिला नहीं है, तो मुझे बोला गया था तुम लोगों को थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए, तो मैं पहले ही आ गया. सो आई एम जस्ट नाउ गेटिंग द मैसेजेस फ्रॉम स्टूडेंट्स. क्या आ रहा है देखें. सबसे पेपर पहले आई अटेम्प्टेड 64, आई अटेम्प्टेड 65. तो ये रेंज जो आप लोग बता रहे हो, अगर ये एग्जैक्टली सही है तो फिर तुम्हें क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता. गौरव ने यहाँ पे बोला है कि 64 क्वेश्चंस किए हैं. देन आयुष कुमार अटेम्प्टेड 65. देन Ankesh is there. He is saying somewhere around 70. 70 is more than enough. उसने बोला था. अब देखते हैं. But some part of my energy. छाया का यहाँ पे मैसेज आया है. उसने अराउंड 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं. एंड रोशन कुमार ने किया है 70 क्वेश्चन. ठीक है. एंड ही इज सेइंग दैट 50% to 60% इज फ्रॉम द क्लास नोट्स इटसेल्फ. तो ये फीडबैक्स बच्चों के आने स्टार्ट हो गए हैं. सेट डी आया मेरे पास में. सेट डी में अब मैं यहाँ पे मेरे पास पेपर तो आया नहीं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने क्लास में डिस्कस किए थे उन्हीं से स्टार्ट करवा देता हूं. जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और उसके 3 पार्ट्स हमारे पास से बने हुए हैं. क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस आयोटा साइन थीटा. ये क्वेश्चन था सबसे पहला, और इसके 3 पार्ट्स बने हुए हैं.
सबसे पहले पार्ट में मॉड ऑफ जेड निकालना है, दूसरे पार्ट में ये बताना है कि थीटा क्या होगा जिससे कि जेड जो है वो प्योरली रियल होगा। प्योरली रियल का मतलब होता है कि तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए, तो वो तो हम लोग जब इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तब पता चलेगा। और एक थर्ड पार्ट ये भी पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच जेड इज प्योरली इमेजिनरी, और प्योरली इमेजिनरी का मतलब होता है कि हमारा रियल पार्ट जीरो हो जाए। तो अगर मैं इसको रेशनलाइज कर देता हूं तो नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस आयोटा साइन थीटा। इसको रेशनलाइज करने के लिए मुझे इसको 1 प्लस आयोटा साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मॉडुलस तो चलो फर्स्ट स्टेप पे हम लोग निकाल सकते हैं इसका, क्योंकि मॉडुलस निकालने के लिए इस पूरे का अगर हम लोग मॉडुलस निकाल रहे हैं, अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो सिंपली अंडर रूट का रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर सकते हैं। तो रूट का 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो कट के आंसर बन जाता है 1, जो कि पहले ही ऑप्शन में अवेलेबल है, 1 ए ऑप्शन होगा इसका। लेकिन प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी डिसाइड करने के लिए मुझे इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ये बन गया तुम्हारा 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूला में जाना पड़ेगा। तो 1 प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आ रहा है तुम्हारा 1 माइनस आयोटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया नीचे, ऊपर अगर खोलते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, और ये बन जाता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें से अगर मैं रियल पार्ट को अलग कर लूं तो ये हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट हो गया 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आयोटा के साथ है। तो अगर मुझे इसको प्योरली रियल करना है तो मुझे इस वाले पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट को जीरो करना पड़ेगा, और इमेजिनरी पार्ट को जीरो किया तो 2 साइन थीटा जीरो हो गया, साइन थीटा जीरो मतलब थीटा हो गया n पाई, थीटा n पाई वाला ऑप्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है सी ऑप्शन में, थीटा n पाई। और प्योरली इमेजिनरी करने के लिए रियल पार्ट को जीरो करना पड़ेगा, रियल पार्ट को जीरो किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जीरो हो जाएगा, यहां से आ गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 मतलब थीटा n पाई बाई 2 वाला जो ऑप्शन है वो तुम्हारा सीधा बैठ जाएगा यहाँ पे, थीटा इक्वल्स टू n पाई बाई 2। तो ये हमारा ए ऑप्शन में है। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जा रहे हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे तो सिंपल वैल्यूज पूछा हुआ है, cos 36 माइनस cos 72, cos 36 माइनस 72। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने खुद ही क्लास में बोला था कि कुछ वैल्यूज याद रख लो और उन वैल्यू से बाहर नहीं आएगा। तो तुम बोलोगे सर ये वैल्यू तो आपने नहीं लिखवाया था, बट मैंने तुम लोग को लिखवाया था sin 54 की वैल्यू और sin 18 की वैल्यू, तो ये डायरेक्ट वहीं से निकल रहा है। sin 54 और sin 18 की वैल्यू हम लोग देख सकते हैं। sin 18 होता है रूट 5 माइनस 1/4, ये होता है रूट 5 प्लस 1/4। सीधा एलसीएम ले लिया यहाँ पे 4 रूट 5 प्लस 1 माइनस रूट 5 प्लस 1, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2/4 यहाँ पे आंसर बन रहा है तुम्हारा। एक बार देख लेना इसको, रूट 5 माइनस 1, ओके 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 एक सेकेंड। तो ये तुम्हारा एलसीएम लिया है ना हमने, तो 4 तो नीचे ही रह गया हम लोग का, ये बन जाएगा रूट 5 प्लस 1 माइनस रूट 5 प्लस 1। एक बार चेक कर लेते हैं, sin 54 cos 36 इज इक्वल टू sin 54 और ये sin 18 रूट 5 माइनस 1/4 रूट 5 प्लस 1/4। सॉल्व करने पे तुम्हारा आंसर आ गया था मेरे ख्याल से 1/2, यस 1/2 इसका आंसर आ रहा है। सी ऑप्शन जो है तुम्हारा बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि रूट 5 तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। Okay, thank you, sir. Students, we've seen that the English paper was pretty nice, and I'm sure you would have done well. And the teachers have solved the question paper in front of you, whatever they could. And in a short while, we'll be recording the entire set of questions of English also, and they'll be made live to you by evening. And now, both the maths sir have solved some questions live for you here. Since the question paper has just arrived and they haven't had time to go through it, so the balance of the questions they are tying up and they will tell you in a short while, they'll give you more answers to it. But as I see it, Shekhar sir, most of the things have been done in the class. 50% of the entire paper is already done in the class. But Yes. This 50% are those questions which based on calculus. Right. Not direct questions. No, but what you taught in the class, the thing was That's relevant to that, but it needs calculation. right. So as your Shekhar sir is telling you, and that your most of the things have been covered in the class. Nupur ma'am, Cavalier students all know, Nasreen ma'am, everybody knows, she's doing polity, she's doing chemistry and bio, and a lot of people who are not too familiar with bio, they can do so.
Now they have just come out and you will be getting the paper in a very short while and we'll be going on air. In the meantime, anything that you want to tell them and that how did you cover the syllabus while you were here? What are the high notes and what do you think is likely to come? We've also got Shashank here who's doing geography. Come Shashank, you're also here, and history. So we've got the entire set of people here. We got polity, we got history, we got geography, we got right. So I think I should be out of frame now. And they would really give you what was in store for you, and by we'll get the paper and we'll be discussing. Over to all the faculty. Thank you, sir. हेलो एवरीवन, हाउस योर मैथ्स एग्जाम? जल्दी से सबके सब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए सब लोगों का एग्जाम कैसा हुआ एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ मतलब वैल्यूएट कीजिए, बताइए कमेंट सेक्शंस में लिख करके कि क्या हुआ, कितने नंबर आए आप लोगों के। ठीक है, सबके सब में बताना है। इसके अलावा अभी आप लोग का जीएटी का पेपर चल रहा है, जीएटी के अंदर आप लोग एग्जाम दे रहे हो, हम लोग सभी आपके साथ हैं, हम सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। जल्दी से लेकर आओ, जल्दी से हम आप लोगों को बताते हैं आप लोगों की गलतियां और आप लोगों ने क्या क्वेश्चन सॉल्व किया है। उसके अलावा आप इवैल्यूएट कीजिएगा, घर जाने से पहले आप लोगों के पास सारे के सारे नंबर होंगे, जल्दी से इवैल्यूएट कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट सेक्शंस में डालना कि आपने कितने नंबर्स आप लोगों को मिले हैं। उसके बेसिस पर नेक्स्ट कट ऑफ, नेक्स्ट डिसीजन हम लोग चेक करेंगे कि भाई अब क्या करना है, नेक्स्ट कितना क्वालिफाई हो रहा है, कितना नंबर आ रहा है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। अनीमिया, ईशान, ये सबसे पहले हमको पता था क्योंकि हमने इसको सबसे पहले याद किया था। ब्लड से क्वेश्चन आता ही है, ऑलरेडी टोल्ड यू, ब्लड एक ऐसा टॉपिक है, क्वेश्चन आना ही है बच्चे, तो ये हम छोड़ के नहीं जा सकते थे। तो चलो एनीवेज, ब्लड से तो आया ही है। कितने लोगों को अनीमिया याद था? मुझे लगता है जो लोग क्लास में पढ़े हैं मुझसे वो लोग अनीमिया भूल नहीं सकते, है ना? ब्लड को देख के सिर्फ एक ही चीज याद आती होगी, दैट इज अनीमिया, राइट? ईशान के अलावा जल्दी जल्दी से शेयर करो पहले सब लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में, और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ हाउ वाज योर एग्जाम। जल्दी से यार, तुम लोग सोते रहोगे कमेंट नहीं करोगे तो मजा ही नहीं आ रहा है। जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी मुझे बताओ। चलो स्टार्ट करें क्वेश्चंस के साथ। पहले मुझे बताओ कितने क्वेश्चंस तुम लोगों को आते थे? अप्रोक्सीमेटली 10-15 क्वेश्चंस हुए हैं जो हम लोगों के बायोलॉजी से, मतलब 10 क्वेश्चंस के बायोलॉजी क्वेश्चन बायोलॉजी से आया है, 13-14 क्वेश्चंस के अराउंड केमिस्ट्री से है, तो बाकी फिजिक्स का है क्योंकि सीडीएस में फिजिक्स का लेवल उतना ज्यादा नहीं रहता है। और वो क्वेश्चन आए जो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, ये आएंगे ही आएंगे, तो इसीलिए फटाफट से कनेक्ट करो जल्दी जल्दी और चेक करते जाओ कि आप लोगों का क्या एग्जाम रहा। हम लोग यहाँ खुलते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 20। येलो कलर देगा सल्फ्यूरिक एसिड अगर आता है हमारे पास में, तो कौन सा कलर देता है हमको? येलो कलर देता है। येलो कलर क्यों देता है? कौन देता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमने तब पढ़ा था जब हम लोग पढ़ रहे थे एसिड रेन नाम की कोई चीज होती है, कुछ होता है एसिड रेन जैसा। एसिड रेन क्या होता है भाई? जब क्लाउड्स बारिश करते हैं तो उसमें सल्फर बहुत सारा आता है, इसकी वजह से ताजमहल के ऊपर जो मार्बल है वो पीले रंग का हो गया। बिकॉज पीले रंग का क्यों हो गया है? इसीलिए हो गया है क्योंकि उसमें क्या था? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या करता है? हमको येलो कलर देता है। ये क्या करता है? हमको येलो कलर देता है। जल्दी से अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता लग जाए, सब लोग फटाफट से तुरंत से लाइव आ जाए और इसको चेक करना शुरू कर दें। ठीक है, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, P75-1 और P75 ऑफ इंडिया, P75I और P75 ऑफ इंडिया एक प्रोजेक्ट आया था। ये प्रोजेक्ट किसके लिए आया था? आप लोग मूवीज देखते हो सबके सब? यार ये वाली मूवीज तो देखा करो जो आर्मी से रिलेटेड होती है, पता लग जाएगा अपने बारे में। कोई बात नहीं, बुक्स में नहीं पढ़ाते तो मूवीज में तो देखे। गाजी अटैक जैसा कुछ पढ़ा था? कुछ होता है गाजी अटैक, कहीं कुछ हुआ था? सबमरीन्स पे था। ये बेसिकली वो प्रोजेक्ट था जब हमको पता लगा कि भाई सबमरीन्स बनाना पड़ेगा, इंडिया शुड हैव सबमरीन्स। इंडिया के पास में क्या होना चाहिए? सबमरीन्स होना चाहिए। इंडिया के पास क्या होना चाहिए? सबमरीन्स होना चाहिए। तो सबमरीन्स जो होती हैं वो किसकी बनाई गई थी? देखो, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनाएंगे। वो क्यों बनाएंगे?
वो हम लोग कहाँ बनाएंगे? वो हम लोग उस जगह पे बनाएंगे जहां पर हम लोगों को वॉर की सिचुएशंस में फाइट करना है। तो न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स नहीं बनाई गई थी, हमने उसके वजह से हमने उसके बदले में बहुत सारे अम्यूनेशन सेंटर्स इंडिया के अंदर स्टार्ट कर दिए थे 2019 में। 2019 ऑनवर्ड्स इंडिया ने बोला भाई ये तो लड़ाई करते रहता है हमसे, कभी पाकिस्तान लड़ लेता है आकर, कभी चाइना लड़ लेता है, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बार बार रशिया को आवाज मारे रशिया सामान दे दे, भाई अमेरिका सामान दे दे, या हम लोगों को गोला बारूद दे दे। हमने बोला हम खुद करेंगे काम। तो इसीलिए हम लोगों ने खुद से बनाना शुरू किया, न्यूक्लियर पावर सबमरीन से बेटर न्यूक्लियर पावर साइट्स शुरू की गई। हम लोग थोरियम जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करने लगे, जो असम में बहुत ज्यादा मिल रहा था, उसका इस्तेमाल करके हम लोगों ने बनाया। तो सबमरीन तो बना ही रहे थे, तो कौन सी सबमरीन बनाई? हमने बनाई वो सबमरीन जो डीजल इलेक्ट्रिकल सबमरीन्स है। हमने कौन सी सबमरीन बनाई? जो डीजल इलेक्ट्रिकल सबमरीन्स हैं। इन सबमरीन्स को बनाने का नाम रखा गया हमारा P-75 ऑफ इंडिया। Hello, you are most welcome to the online platform of the Cavalier. And right now, first of all, I would like to discuss the question I have already discussed you in the class. जो questions मैंने आपको already करवाया है और जो पहले notes में दिए हुए हैं, वो सेम क्वेश्चन सेम फॉर्मूले हैं, वही क्वेश्चंस में सबसे पहले वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चंस इज वेरी वेरी सिंपल एंड द डिफरेंस इज ओनली दैट इन दिस केस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम द मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। जनरली क्वेश्चंस जो हैं वो मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी से पूछे गए हैं। पीछे लास्ट ईयर जो क्वेश्चन थे वो ऑप्टिक्स से क्वेश्चंस आ रहे थे, और इन दिस केस द डिफरेंस इज ओनली most of the time questions comes from the optics, but in this case questions comes from the mechanics and electricity, and problem जो है वो 4 questions that is numerical, and the remaining questions is that is the theory portion. The question number 27, the acceleration due to gravity on the surface of the earth depends on, first of all this is the question number 27. The acceleration due to gravity at the surface of the earth depends on, we are given the 4 options. The first is its mass only, its radius only, both its mass and radius, and the other its mass and its radius. During the first class of gravitation, I have already told you, you know that this is Z equal to, this one is Z equal to Gm by R square. This is the small g acceleration due to gravity on the earth's surface, and it depends on the 2 factors. This is capital M, its mass of the earth, and R is the radius of the earth. When you will open the notes, this is the first topic, relation between a small g and capital G, and I have written it Z equal to Gm by R square, where M is the mass of the earth and R is the radius of the earth. This is the same questions, and according to this, C is the correct answer. It depends on its mass and radius. Okay. Now we come to the next question. The question is 23. An object is dropped from a height onto the floor. Which of the following remains constant during its fall? An object is dropped from a height. एक ऑब्जेक्ट को यहां से फॉल किया गया है onto the floor. Which of the following remains uniform as its fall? जैसे ये फॉल करता है तो in that case we have to find ये कौन सा quantity जो है that will remains constant. You are given the 4 options. The first one is acceleration, second is momentum, third is kinetic energy, and fourth one is potential energy. We have already discussed in the law of conservation of energy in case of the free fall. मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया हुआ है कि acceleration due to gravity, this is acceleration, this will be constant. The acceleration due to gravity, that is plus g, that will be the constant during its fall. That means if a body falls under the gravity, then acceleration due to its acceleration will be constant. So the correct option is the A. A is the correct option. We have already discussed in the class